Hi guys, I am Akshita and I am from Baghi, Himachal Pradesh. बागी एक बहुत ब्यूटीफुल विलेज है जिसकी एलिवेशन ऑलमोस्ट 79 to 9,000 है और ये अपर हिमाचल में है. इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज एंड ये फेमस है एप्पल ट्रीज़ के लिए, लेकिन कई ग्रोवर्स चेरी ट्रीज़ भी लगाते हैं एंड बीइंग वन ऑफ देम आई थॉट व्हाई नॉट शो यू चेरी फार्म. अभी मोस्टली चेरीज ग्रीन ही है बिकॉज हम काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ पे फ्रूट सेट होने में काफ़ी टाइम लगता है. सो ऑलमोस्ट अ वीक और 10 days will take for these cherries to ripe. If you were to guess the age of these trees, I don't think so you will be able to because they are 20 years old. Yes, you heard it right. ये cherries 20 years old पुरानी है. I mean cherry trees. Sorry for that. And ये अलग अलग वैरायटी की चेरीज है, so they will come accordingly. कोई अर्ली वैरायटी है, कोई लेट वैरायटी है. Look how calm and peaceful this place is. This is my favorite orchard. ये बाकी orchard से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ द चेरी ट्रीज. एंड जो चेरी ब्लूम भी होता है वो बहुत ही प्रिटी होता है यहाँ पे, विच हैपन्स इन मिड मार्च और मे बी एंडिंग ऑफ द मार्च. किसी भी फार्मर के लिए, किसी भी ग्रोवर के लिए आई थिंक उनका हार्वेस्ट, उनका क्रॉप, इट्स नॉट जस्ट फॉर मनी. आई थिंक इट्स अ फेस्टिवल फॉर देम बिकॉज दे वर्शिप देयर वर्क. एंड जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी लोग हर चीज़ के लिए डेटीज़ पे डिपेंड होते हैं. सो बिफोर द सीजन स्टार्ट्स दे विल ऑफर not something major, but yeah, something little to their deities, just a prayer maybe before they start a season. इन चेरी ट्रीज के साथ यहाँ पे एप्पल ट्रीज भी है. जो अक्टूबर में आएगा, so that's a long way to go. But right now we are here to talk about cherries, and I think that's it because अभी as such कुछ भी नहीं है. But the process that I can explain is that after a week or so, cherry season जब शुरू हो जाएगा, so we have to, we have to arrange some labor because this is not something that can be done by one or two person. We need at least 4 to 9 people to help us with this. There's packing, there's grading, and one obstacle जो यहाँ पे growers को face करना पड़ता है, that is the birds. Birds, they feed on cherries because अभी और कोई fruit नहीं है यहाँ पे. So there's something that a drill, I would say, जो यहाँ पे लोग करते हैं. एक टीन का कुछ भी आप ले सकते हो and then you take a stick and you bang it, जिससे शायद birds उड़ जाती है. But to be honest, now they're used to them. Other than that, of course, natural calamities like hailstone, इसके लिए nets लगाई गई है. I don't know if you can see that. Wait. Which is one of the most important thing in this village because यहाँ पे hailstorm बहुत ज़्यादा होता है. So our lifeline is dependent on these nets. And just like any other tree, the process starts with bloom, petals fall, and then leaves, and then the fruit will set. There's one more tree that's my favorite, and I want to show you. Please come. These are apple trees. You'll have to walk a little with me. There's only one tree in my orchard which is my favorite, and that is the apricot. It's still not ready, but then that's how I like to have it. It's still not done. Almost a month will take, I guess. But that's the favorite tree in the orchard, and rest is apple trees and cherry trees.
So in the end, I just want to say, please guys, if you like my video, subscribe my channel and show some love. I hope I'm able to show you all that happens in this village through my vlogs. Thank you.